हाय फ्रेंड्स। ऑसिलेशन चैप्टर के ऊपर जो हमारी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। तो ऑसिलेशन चैप्टर के ऊपर सभी थ्योरेटिकल बीट्स हमने ऑलरेडी लर्न किए हैं। अभी आज के इस लेक्चर से हम इस चैप्टर के ऊपर जो एक्सरसाइज हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दी है उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाद में इसी चैप्टर के ऊपर जो दिए वाले एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज को ठीक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक न्यूमेरिकल्स है, यानी ओवरऑल 15 न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो 15 न्यूमेरिकल्स को एक ही लेक्चर में सॉल्व करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के इस पहले लेक्चर में पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे वाले में नेक्स्ट 5 और तीसरे लेक्चर में बचे वाले 5 को सॉल्व करके लास्ट वाले लेक्चर में हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसकी ऑसिलेशन चैप्टर के ऊपर जो एक्सरसाइज है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ये है तकरीबन पेज नंबर 129। ये पेज नंबर 129 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 को आप कॉन्सेंट्रेट करिए। यहाँ से न्यूमेरिकल चालू होते हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो सब क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। So let us start solving the numericals from problem number 8. So first of all, we will read what is given into the problem number 8. So at what distance it has been asked what is x is equals to. From the mean position is the speed of particle performing SHM is half of its maximum speed. At what distance the speed of the particle d is half of its maximum velocity, that has been asked. Given that path length of the particle is equals to 10 cm. चलो इसका सोल्यूशन लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग लर्न कर चुके हैं पाथ लेंथ जो होती है वो डबल ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। और यहाँ पे कोई पार्टिकल जो लीनियर रिसेप्शन परफॉर्म कर रहा है अलोंग दिस पाथ ए बी एंड अबाउट दिस मेन पोजीशन ओ। तो ये तो ए से लेके बी तक का जो पूरा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पाथ लेंथ। और इन दिस केस इट इज गिवन दैट दिस इज 10 cm। इस पाथ लेंथ के सेंटर पे मेन पोजीशन होती है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर। यानी हमको इनडायरेक्टली एम्पलीट्यूड दिया है, so we can write here that if path length is 10 centimeter, amplitude A is equals to 5 centimeter. Now what is given, V is equals to V max, but for a particle performing simple harmonic motion, what is maximum velocity? Maximum velocity V max is equals to A into omega. So let us put the value into this equation. It is given that V is equals to half of V max. So we get V is equals to half into A into omega. But what is velocity is equals to? But velocity is equals to omega under root of A square minus x square. So this is equation written from the given data, and this is the standard formula for velocity. So equating these two, we can say that omega under root of A square minus x square is equals to half A into omega. So omega on both sides cancel. Now taking square of both sides, we get here on left hand side square and root cancel. So this is A square minus x square is equals to, राइट हैंड साइड पे देखिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ये जो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, वो प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 a स्क्वायर राइट हैंड साइड पे प्लस है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो नाउ दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस 1/4 a स्क्वायर is equals to x square
So this is equals to a square, common in the bracket, 1 minus 1 by 4 is equals to x square. So this is a square in a bracket, 4 minus 1 upon 4, 4 LCM है और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके हमको मिलता है 4 minus 1, क्योंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यानी कितना है 1 है. So this is equals to x. So you can see this is 3 by 4, a square is equals to x square. So now taking square root of both sides, we get x is equals to, देखिए this is अंडर रूट ऑफ 3, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a. Now we will put the value of a. What is a is equals to, a is equals to 5 centimeter. So we get x is equals to under root of 3 upon 2 into 5. So this is 2.5 into root 3. So if you put the value of root 3 and multiply it with 2.5, this will come to be 4.33 centimeter. So this is the distance from mean position at which the velocity will be half of the maximum. So this is all about the numerical number 8. Now let us come to the next numerical. What is given into question number 9 now? In SI units, the differential equation of an SHM is, the differential equation is given, and what is it? d2x by dt square is equals to minus 36x. Find its frequency and rate. So we are required to find out what is frequency f and what is time period capital T is equal to. So solution, comparing given equation with, let us compare, comparing given equation with now what is the standard differential equation of linear SHM? This is d2x by dt square is equals to minus omega square x. So you can see for this both equations, left hand side is having d2x by dt square, and on right hand side you can see that in the standard equation there is x, in the given equation there is x. What does this mean? The omega square in standard equation must be equals to 36 into the given equation. So we get that omega square is equals to 36. From this we get omega, which is our angular speed, is equals to 6 radian per second. So once we get omega, we can find out the time period and frequency. So what is time period T? Time period T is equals to 2 pi by omega. This is 2 into 3.14 upon omega is 6. So 2 and 6 cancel. So you can see that T is equals to 3.14 upon 3. This 2 and 6 cancel. So now if you divide 3.14 by 3, this will be 1.05 seconds. So we get time period for this SHM as 1.05 seconds. Next, we will go to the frequency. Now what is frequency is equals to, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं. Is reciprocal of time period, that is 1 upon 1.05, or you can go by the another method, that is frequency is equals to omega upon 2 pi. So omega is again 6 upon this is 2 pi, that is 2 into 3.14. So this is
3/3.14, यहाँ पे फिर से 2 और 6 कैंसिल, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे डेसिमल को 2 प्लेसेस से आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 300 divided by 314, and now if you divide 300 by 314, this f will be equals to 0.955 hertz. This is how we get the frequency of the particle performing linear SHM. So now let us try to solve question number 10. What is given into the question number 10? First of all, we will write the given data. A needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 cm. The amplitude is given to be 4 cm. With frequency is given to be 5 hertz. Find its acceleration 1/30th second. Time t is given. This is 1/30 second. Find its acceleration. So हमें find क्या करना है? We are required to find out acceleration a. और a कंसीडर करेंगे इसके सिंबल को. After it has crossed the mean position, so we are just required to calculate acceleration after time t is equals to 1/30 second, and f is given to be 5 hertz. So solution, all of you know what is formula for acceleration of a particle performing mean position when it crosses the mean position, performing SHM when it crosses the mean position. So we have acceleration a is equals to minus omega square x. देखिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ओमेगा की जरूरत होगी और एक्स की जरूरत होगी. तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर से ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो टाइम दिया है t इज इक्वल टू 130 सेकंड के ऊपर से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यानी हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा 1/30 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर से ओमेगा कैलकुलेट होगी. तो ये दोनों को यहाँ पे रख के एक्सेलरेशन को सॉल्व कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ओमेगा, एंड वी नो दैट f is equals to omega upon 2pi. From this we can say angular speed omega is equals to 2pi f. We get omega is equals to 2pi into 5, that is equals to 10 pi रेडियन पर सेकंड. फिलहाल ओमेगा को ऐसे ही रखेंगे, बाद में पाई की वैल्यू रखेंगे. So this is 10 pi रेडियन पर सेकंड. This is our first intermediate method. Then we will calculate x. So for a particle performing linear SHM starting from mean position, we give x is equals to a sin of ओमेगा t. पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 होगी. So this is equals to, now put value of a, amplitude is given 4, and this is sin, and again now we will put the value of omega as 10 pi into t is given to be 1/30 second. So this is equals to, देखिए 10 और 30 कैंसल, ये हो जाएगा 4 sin of pi by 3, sin of pi by 3. So this is equals to 4 sin of 60. And all of you should know the value of sin 60. So what is sin 60? So you should know that here I will take some of the standard values. Theta is equals to 0, 30, 45, t or 90. And here I will write the value of sin of theta. So sin of 0 is 0, sin of 90 is 1. यानी 0 से लेके 1 की तरफ वैल्यू बढ़ते जा रही है,
Sine of 30 is 1 by 2. Sine of 45 is 1 by root 2, or sine of 60 is root 3 by 2. These values can be expressed in terms of decimal also. तो 0 की जगह 0 आएगा, 1.2 1 by 2 होता है 0.5, 1 by root 2 is 0.707, root 3 by 2 is 0.866, and this one is negative. अब हमें चाहिए क्या, साइन ऑफ 60 के लिए. तो आप देख सकते हैं साइन ऑफ 60 की वैल्यू हो जाएगी 0.866. दिस इज 0.866. So from this we get x equals to 4 into 0.86. इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशंस. So 0.86 multiplied by 4. So this is 4 6 are 24, carries 2, again 4 6 are 24 plus 2 26, carries 2, 4 8 are 32 plus 2 is 34, और 3 जोड़ के डेसिमल देंगे. So this will be 3 प्लेसेस को छोड़ के 1 2 3, so this will be 3.464. So we get x is equals to 3.464. So we get two values which were required, omega and x. Now let us put into this formula. Put these values into equation 1. Let it be equation 1. So we get acceleration A is equals to minus omega square. Omega is 10 pi. Its square into x is 3.464. So we get A is equals to, magnitude consider करते हैं. This is about the magnitude and direction. So this I can write it as A bar. तो माइनस साइन को ड्रॉप कर देते थे, ड्रॉप कर देंगे क्योंकि let us consider only magnitude. So this is 100 into pi square into 3.464. तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये हमको 4 into 10⁻⁻2 मीटर लेना पड़ेगा. यहाँ पे जहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू रखी थी, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4 into 10⁻², ये भी हो जाएगा 3.464 into 10⁻². Here I again write 10⁻². So now this 100 is 10⁻+2. pi square को approximately 10 ले लेते हैं, and this is 3.464 into 10⁻² मीटर. यहाँ पे 10⁻+2 और 10⁻² कैंसिल. So acceleration A is equals to 34.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टैंडर्ड आंसर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं. पहले 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर इसको मैच कर रहा है, आगे वाले थर्ड प्लेस को मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू डायरेक्टली 10 ले ली थी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है, अगर आपको 3 प्लेसेस तक या 4 प्लेसेस तक इसको एक्यूरेट चाहिए, तो आपको यहाँ पे पाई स्क्वायर की एक्यूरेट वैल्यू रखनी पड़ेगी. You can put the value of pi square and get the answer right up to 3 to 4 decimal places. So this is all about question number 10. Now we will go to question number 11. So what is given? First of all, we will read the question number 11. Potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square joule. So potential energy is given. Potential energy is equals to 0.1 pi square x square joule. If mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM. Again, it is given that mass of the particle small m
is equals to 20 gram. And what is required to calculate it? Find the frequency of SH. Frequency of SH. So solution. तो ऑलरेडी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लर्न किया है. So the potential energy of a particle performing linear SHM is given as potential energy is equals to 1 by 2 m omega square into x square. Now what is given here? The potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square. इसकी वैल्यू रखते हैं. So we get half m omega square x square is equals to 0.1 pi square x square. So you can see x square and x square cancel. So we get half m omega square is equals to 0.1 into pi square. ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमें मिलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय m आगे डिवाइड हो जाएगा. m की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ. दिस इज 20 ग्राम मीन्स 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है इसलिए उसको कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट किलोग्राम में. ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻. और ये 2 यहाँ पे डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए. So now this you can see 2 and 20 cancel. This is 10. So this 10 and 10⁻³ cancel. This is 10⁻². तो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻². So we get omega square is equals to 0.1 into pi square into 10⁻². So here again we will take approximately pi square as 10. So this is 0.1 into 10 into 10⁻². 0.1 into 10 is 1. So 1 into 10⁻². So we get omega square is equals to 1 into 10⁻². Taking square root of both sides, omega is equals to 10 radian per second. Now we can calculate frequency. So what is frequency is equals to? Frequency is equals to omega upon 2 pi. So omega is equals to 10. This is 10 upon 2 into 3.14. So we get F is equals to 5 upon 3.14. So this 2 and 10 cancel. So if you solve this, पहले तो डेसिमल को 2 प्लेसेस से आगे बढ़ाएंगे. This is 500 divided by 314. So we get frequency F is equals to. Let us divide this. इसको divide करते हैं. So here I will write calculation. You can go by both method. Better way you can go for log and anti-log, or by this our classical method. तो यहाँ पे पहला जो डिवीजन है वो 1 का होगा. So this is -314. 10 minus 4 is 6. कैरी हो गया 2. 10 minus 2 is 8. कैरी हो गया 4. 5 minus 4 is 1. यहाँ पे डेसिमल देंगे. ये हो जाएगा 1860. And now you can see that 6 3 का 180 हो जाएगा और 14 6 ये 7 का 5 का यहाँ पे डेसिमल हम यहाँ पे डिवीजन ले सकते 1.5 ले सकते. Okay. So multiplied by 5. So this will be 5 4 the 20. Carry is 2. 5 1 the 5 and 2 is 7. 5 3 the 15. Let us subtract this.
डेसिमल क्या आएंगे, 2 प्लेसेस तक इसको हम कंप्लीट करेंगे। 0 माइनस 0, 16 माइनस 7 इज 9, कैरी यहाँ पे दे दिया, हो गया 6, 8 माइनस 6 इज 2 एंड दिस इज 1 माइनस 1 इज 0। नाउ वी कैन सी दैट दिस इज 314। इसका अगर डबल लेंगे तो यहाँ पे ये डिवीजन नहीं होगा, इसलिए हमको यहाँ पे 0 का भाग देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2900। So this is about 1.50. So frequency is equals to 1.50 hertz. यहाँ पे आप स्टैंडर्ड आंसर को देखेंगे, ये है 1.58। ये भी मैच हो सकता था अगर हम यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 नहीं लेते थे। आप इसको पाई स्क्वायर की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, so that you will get correct answer to 3 places, that is up to 1.581 hertz. So this is all about question number 11. Now let us solve question number 12. So first of all, we write down the given data. The total energy of a body of mass 2 kilogram, mass of the particle small m is given to be 2 kilogram. Performing SHM is 40 joule. So total energy is given to be 40 joule. Find its speed while crossing the center of the path. Center of the path and mean position. So we are required to calculate velocity of the particle at mean position, and all of you know that velocity of the particle performing linear motion at mean position is always maximum. We are required to calculate V maximum. So solution, V maximum हमको निकालना है। So what is the formula for V maximum? So V maximum जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में आज डिस्कस किया था, this is A into omega, where A is amplitude and omega is angular speed. So now see, we'll use the formula of total energy to get the value of A into omega. So first of all, what is the formula of total energy of the particle performing linear SHM? This is half m omega square a square. Half m omega square a square. So let us put values. Half. Now m is 2 kilogram into this omega square a square as it is equals to total energy कितनी है 40. Here you can see 2 and 2 cancel, so we get a square omega square is equals to 40. So now taking square root of both sides, you will get a into omega is equals to under root of 40. So under root of 40 को सॉल्व करते हैं, this is under root of 4 into 10 and this is equals to 2 root 10, and as all of you know, root 10 is 3.16. This will be 6.32 meter per second. So we get V max 6.32 meter per second. यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड है, और सभी डेटा SI यूनिट में है, तो V मैक्स का यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा। So this is all about question number 12. Now we will go to question number 13. So now let us solve problem number 13. तो शुरू में given data लिख देते हैं। A simple pendulum performs SHM of period 4 seconds. It is given that the time period of the simple pendulum capital T is equals to 4 seconds. Now what is else is given?
how much time after crossing the mean position. How much time means what is small t is equals to. After crossing the mean position, will the displacement of the bob be 1/3? So displacement x is 1/3 of its amplitude a. So we are required to calculate t. Solution. So for a particle performing linear SHM, the displacement x is given as x is equals to a sin of ओमेगा टी. देखिए पार्टिकल ने जस्ट मीन पोजीशन क्रॉस की है, उसके बाद का टाइम चाहिए. तो एज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो फाई वी टेक एज 0. तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी आएगा. तो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई. जनरली ये इक्वेशन होती है. So as the particle has crossed mean position, we will take phi to be as 0. So now let us put value of x. It is given to be 1/3 into a. And we will get the value of omega from this data. Time period t is equals to 4 seconds. So time period t is equals to 2 pi by omega. From this we get omega is equals to 2 pi by t. Put values. Omega is equals to 2 pi by 4. This is equals to pi by 2 radian per second. Now we'll put these two values. So x is 1/3 of the amplitude is equals to a sin of, and now omega is pi by 2 into this t which is to be calculated. So a and a on both sides cancel. So we get 1/3 is equals to sine of pi by 2 into t. ये साइन इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा पाई बाय 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3. तो 1/3 को डेसिमल में लिखते हैं. तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0.333. तीन ही प्लेस तक वैल्यू लेते हैं डेसिमल के बाद. अभी हमको साइन इनवर्स ऑफ 0.33 जो हमारे पास नेचुरल साइन का टेबल टेक्स्ट बुक के एंड में दिया है उसमें से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें जनरली याद होने की पॉसिबिलिटी कम है. तो आई विल यूज द टेबल ऑफ नेचुरल साइंस. देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नेचुरल साइंस का टेबल ऑलरेडी शेयर करके रखा है. अभी हमको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? 0.33 को ढूंढना है. तो आप देखेंगे इस टेबल में 0.33 के नियरेस्ट वैल्यू कहाँ पे है. देखिए तो यू कैन सी यहाँ पे देखिए ये सभी वैल्यूज डेसिमल में होती है. ये 0.3289, ये 0.3305 होगा. हमें 33 चाहिए. 0.3322 और ये 0.3338. ये वैल्यू हमारी वैल्यू को क्लोजेस्ट है. तो विल यूज दिस वैल्यू. ये 0.338 कौन से टेबल में है? तो ये है 19 dB के टेबल में. और इसका ऊपर कितना मिनट है वो देखेंगे. तो ये है 30 मिनट यानी 0.5 डिग्री. तो ये यहाँ पे 19 डिग्री और ये यहाँ पे 0.5 डिग्री यानी साइन इनवर्स ऑफ 0.33 हो गया 19.5 डिग्री. हमें साइन इनवर्स की वैल्यू मिल गई और ये कितनी मिल गई? 19.5 डिग्री. और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 5/2 इंटू टी. यहाँ पे आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो हमको वैल्यू मिली ये है डिग्री में. तो अगर डिग्री कोई ऐसा यूनिट नहीं है इसलिए हमको इसको पहले जो एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड ऑल ऑफ वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. इसलिए ये 19.5 डिग्री को
रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज पाई बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 19.5 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। So pi and pi on both sides cancel. So we get t is equals to, ये 2 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So this is 19.5 into 2 divided by 180. So this is 19.5 into 2 कर लेते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 होता था तो उसका डबल 40 होता था, तो 19.5 और 19 होता था तो 38। दोनों के बीच के वैल्यू है 19.5, ये भी 38 और 40 के बीच में है, ये 39 हो जाएगा। तो दिस इज 39/180। तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तो विल गो बाय another way. So let us this 2 and 180 cancel, this will take as 90. So now we can calculate it easily. So t is equals to, हमारे पास अभी बेसिक कैलकुलेशन क्या है, 19.5/90। so this can be expressed as, इसको पहले 10 से डिवाइड करते हैं। so this is 10 9s are 90 and this is 1.95. So we get 1.95 by 9. So this comes to be equal to 0.216